हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुबीना खान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक्स में से एक टॉपिक है। इस पर बेशुमार मीम्स बनी है, इस पे सॉन्ग्स भी बने हैं, इस पे फ़नी क्लिप्स भी हैं और ये एक बहुत ही सीरियस बात है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना का इंटरव्यू लिया हार्ड टॉक में स्टीवन सैकर ने, जिस पर उनसे बहुत ही हार्ड क्वेश्चंस हुए। ऑब्वियसली उनके प्रोग्राम का फॉर्मेट यही होता है कि उनकी कोशिश यही होती है कि सवाल का जवाब हासिल किया जाए। तो सुनते हैं हम कि स्टीवन सैकर और इसहाक डार में बातचीत क्या हुई। In that case, let's be very open and transparent with Yeah. each other. I've interviewed many government officials and ministers around the world over many years, and Sure. they always say, "Oh, I'm not responsible for any corruption at all, and I believe in transparency." I do. You do. Oh, so yes, how of many course. properties do you and your family own? It's all declared in my tax returns. Well, just give me the answer because I don't I know. own- How many properties do you and your family own? I have my main residence in Pakistan, which has been taken over by this regime. So I haven't got too many properties. But How many properties do you and your family own? my net worth is what has been No. reported. How many properties do you and your family own? One. One My sole property. You and residence. your family own Yes, one property. my sole So residence. all of these stories in the Pakistani press about multiple properties owned by your family inside Pakistan, property interests overseas, including in Dubai. And we're sitting in London. We're sitting in London. You own nothing in London. No. Your family, not just you. Your family. No, not at all. Own nothing. No, because And you Dubai? see, the government. Dubai? My sons have just one villa, which is owned by them. They're in business for the last 17 years. So when I asked you how many properties you and your family own, and you said one, that wasn't That is- strictly true. No, it is strictly true because they're adult, they're married, they're 17 years they're in business, so they're independent of me. You know And they- very they- well that when the NAB looked at your assets, they were looking at you and your family. I have no issue. My family, everything is accounted for. That's exactly, you See, if all of this is so clear cut, you only own one property in the entire world. Your tax records have been kept and given to the authorities over the last Yeah. 20 years. If everything is so crystal clear, Yeah. why do you not go to Pakistan and make this case in a court of law? Well, the court of law, my lawyers were there. I'm here for medical treatment. I have a cervical issue. You've been here for what, best Yeah. part of 3 years on this Yeah, medical issue? almost, yes, I am. Are you still really suffering? Yes, I am. And you couldn't possibly get back to Pakistan? Well, let's see what's happening in Pakistan. Where are the human rights? What's happening in NAB custody? Where people have dozens of people have been killed virtually. But sorry, you're saying there's that the people human being rights abuses. investigated by the NAB, the National Accountability Bureau, have been killed? स्टीवन सैकर ने क्लियरली कहा कि आपकी प्रॉपर्टी के बारे में बहुत से ग्रेव क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में आप लोग आंसर नहीं दे रहे। इसहाक डार के बेटे जो कि दुबई में रहते हैं, उनकी वीडियोस बहुत महंगी महंगी गाड़ियों में वायरल हुई थी, जिसके बाद नैब ने उनके ऊपर क्वेश्चंस उठाए थे और इस तरह ये सिलसिला बना कि जो ही इनको ये लगा कि इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा और इनके पास जवाब देने के लिए नहीं है, तो इसहाक डार भी पाकिस्तान से फ्लाई करके लंदन में आ गए। अब जो ये कुछ कह रहे हैं उसका जवाब देने में नाकाम है, बहुत एम्बैरेसमेंट है। उनकी एक्सप्रेशन देखें, बिल्कुल एक तरह से ये फेलियर किस्म का वो इंटरव्यू उन्होंने दिया है, उनकी अपनी बहुत बदनामी हुई है। अभी कुछ हम मीम्स देखते हैं। लोग बहुत सी ट्वीट्स में ये कह रहे हैं कि दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूके जर्नलिज्म और पाकिस्तान का जर्नलिज्म। मेरे सामने एक ट्वीट है, इन्होंने लिखा है कि डिफरेंस बिटवीन रेंटेड एंड रियल जर्नलिज्म इज़ एविडेंट, दैट वाज सो अनकंफर्टेबल टू वॉच हैशटैग इसहाक डार एंड दैट्स वेरी वेरी ट्रू कि इसको देखना बहुत ही एम्बैरेसमेंट के साथ साथ ये एक जैसे कि कोई इंसान झूठ बोल रहा हो तो किसी को अच्छा नहीं लगता, और ख़ास तौर पर मिनिस्टर्स जब अकाउंटेबिलिटी को फेस नहीं कर पाते तो पाकिस्तानी कौम के लिए भी एम्बैरेसिंग मोमेंट्स हैं। इसहाक डार के बारे में बहुत से लोग कह रहे हैं कि somebody have reminded him that he was on hard talk, not capital talk. One can only mourn at the standard of journalism in Pakistan. क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आंसर कभी पाकिस्तानी टीवी स्क्रीन्स पर हमने जिस तरह के स्टीवन सैकर ने किए हैं और जिनका जवाब देने के लिए वो तैयार नहीं थी। एक तो हमारे यहाँ एक ट्रेंड ये है कि जब अपने मुल्क में होते हैं तो कहते हैं अपने मुल्क में तो हर कोई शेर होता है, तो यहाँ पर जितने वो घबराए हुए हैं, जितने उनकी परेशानी चेहरे से जाहिर है, वो सब देख रहे हैं।
اور اگر آپ کے پاس جواب تیار نہیں تھے تو آنا ہی نہیں چاہیے تھا. کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ ان کی ایک تصویر سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وین یو ہیو آؤٹ آف سلیبس کوشچنس ان دا ایگزام سو دس ہیپنس، یعنی ان کے چہرے پہ بالکل پریشانی، بالکل گھبراہٹ، اف کیا کریں، تو ان کے پاس کوئی جواب آ نہیں رہا ہے. سو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. وین یو ریئلائز دس از ہیش ٹیگ ہارڈ ٹاک، سو واقعی یہ ہارڈ ٹاک تھی. اس میں اسحاق ڈار بالکل ناکام ہو گئے اپنے سوالوں کا جواب دینے کے لیے. سب سے بڑا سوال تو یہ اٹھ رہا ہے کہ ان کو جانا بھی چاہیے تھا کہ نہیں ایسی ٹاک پہ، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا. کس کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے یہ سوچا کہ نہیں وہ جائیں گے اور شاید وہ فیس کر پائیں گے. وہاں پر بڑے بڑے نہیں ٹھہر سکے تو وہ لوگ جنہوں نے چھپایا ہوتا ہے، اپنی پراپرٹی چھپائی ہوتی ہے، اسی کے بارے میں ان کے سوال ہونے تھے اور ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھا. اس لیے یہ نہ صرف امبیرسمنٹ صرف یہ ہمارے ملک میں رہنے والے لوگوں کے لیے بھی ہے کہ ہمارے اوپر ایسے حکمران حکمرانی کرتے ہیں جن کے پاس سوالوں کے جواب بھی نہیں ہوتے اور وہ چلے آتے ہیں. اسحاق ڈار کے لیے اس کے ساتھ روبینہ خان کو اجازت دیجیے. بہت جلد کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ میں آپ سے ملوں گی. اللہ حافظ.